Uh, Hello, students. Today I felt like just a minute, just a minute. Give me just 1 minute, children. I felt like I should interact with you. After since a long time now, I was feeling that I needed to interact with you. So I have chosen this camera option today, where I will be revising this chapter. Let me take this camera on one side. थोड़ा कैमरा छोटा कर लेते हैं, ओके? हाँ, you the visibility is there. Um, yes, I felt I should interact with you. I'm just revising this chapter once. The children had a lot of questions while my interaction today with the students. I felt like I needed to make some things very clear. Children should feel like whatever they are doing, they should feel confident now. Just seeing the video, some of the students said, "Ma'am, क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा. Camera ठीक से नहीं दिख रहा. The words are not clear. The text is not clear." So I thought कि let me come along with my lecture because it's a half an hour class, no? That's why I felt like we should have a proper interaction, and just for that reason I have just chosen the camera today, but I'm not very comfortable with the camera. Yeah. So you can see the text at back, okay, children? And we are revising this chapter, The Rise of Nationalism in Europe, okay? Now, children, what happens is that we have already read a lot about the rise of nationalism in Europe. Many a times you have certain problems, you have certain issues related to chapter. So I thought, ki, why not clear it then and there? So I will start with page. The revision work that we'll be doing, it would be along with my lecture क्या है मतलब you will be seeing the chapter there, and I'll be pointing out certain things that you need to know. Got it? अभी फर्स्ट पेज में क्या है, we had already discussed. फर्स्ट पेज में हमने क्या डिस्कस किया था? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यूटोपियन विजन. नाउ फॉर 1 मार्क इट्स वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन, तो ये आप इसको कर लीजिएगा. मीनिंग्स आपके साइड में दिया ही हुआ है, यू ऑल कैन सी इट इज़ वेरी क्लियरली गिवन, ओके? सेकेंड पेज में चिल्ड्रन, द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वेर देयर. सेकेंड पेज में द फर्स्ट पैराग्राफ इज ओनली इम्पॉर्टेंट. गॉट इट, चिल्ड्रन? अभी इसमें स्यूरो ने जो पेंटिंग बनाई है, फर्स्ट पेज वाली जो आपने पेंटिंग देखी, द पेंटिंग दैट यू हैव सीन, स्यूरो हैज़ मेड दैट पेंटिंग. दैट पेंटिंग इज clearly talks about nationalism in Europe in a very different manner. And this nationalism has totally changed uh, the traditions and the customs in Europe. Got it? That is there. What is important here is where this has happened. Just see. German people, two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary. ये जो है इसको इसके बारे में आप बता सकते हो. You can definitely talk about it in the second page. That is important. Another thing that is important here is, children, about one of the student had asked me about the nation state. Now I am just expanding it. I hope it is into you. Okay, the nation state. Nation state क्या था? It was one in which the majority of its citizen, just see it is mentioned here, children. What actually was a nation state? The majority of its citizen
and not only its rulers came to develop a sense of common identity. मतलब the people understood that the country they are staying in वो उनका देश है. पहले नेशन स्टेट बनने के पहले ये बात नहीं थी. पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशन स्टेट्स, कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, पहले बस रहने के लिए रहते थे. बट नाउ द टाइम हैड कम व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट हैड कम अप. दैट वाज इम्पॉर्टेंट. यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है बच्चों. चिल्ड्रन सेड दैट मैम नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग that nation state was one which in which majority of its citizen, sare everybody, not only the rulers but all its citizens, and came to develop a sense of common identity. उनको लगा कि वो जिस कंट्री में रह रहे हैं दैट कंट्री बिलोंग्स टू देम, और उनको लिए भी अगर कंट्री को उनके लिए कुछ करना है तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी कंट्री के लिए कुछ करें. Got it, children? So that makes it important, that makes it very sensible. आज इंडिया इज ऑल्सो नेशन स्टेट. पहले ऐसा नहीं था. पहले ऐसा नहीं था. पहला मतलब व्हेन इफ आई टॉक फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एंशियंट पीरियड. एंशियंट से पहले का जो समय था, बाउंड्री नहीं थी ना. नहीं था. लोग जहां मन चाहता था वहां जाते थे, बट इट वॉज ऑल रोडवेज. जो थोड़ा एडवांस्ड हो जाते थे दे यूज टू गो थ्रू वाटरवेज. गॉट इट? तो अ डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री, भाईचारा होता था. देर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, इंटेग्रिटी. ये सारी चीज़ें जो है नेशन स्टेट के वजह से डेवलप हुई. गॉट इट? उसके बाद बेटा सेकंड में, उसके बाद तो आई थिंक फ्रेंच रेवोल्यूशन. मुझे इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज नाइन्थ में भी पढ़ा है आपने, टेंथ में भी पढ़ा, भी एक टॉपिक था. सो यू कैन ईजली गो थ्रू इट. In the whole chapter, while I was making my videos, I have been referring to this map that is given here, children. ये जो पीछे में मैप दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें में से की हैं. Got it? And to understand this chapter, you really need to understand the map. इस मैप को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो you will be very confused in understanding major concepts in this chapter. Got it, children? So just check out that you remember this map. इस मैप को आप कम से कम बेटे try to understand, take a European map. प्लीज़ प्रैक्टिस दिस मैप फॉर 5 to 10 times. 5 से 10 बारी इस मैप में जितने भी स्टेट्स दिए हुए हैं प्लीज़ मार्क इट ऑन द यूरोपियन मैप. और ये यूरोपियन मैप कब का है? आफ्टर द कांग्रेस वियना 1815. 1815 में ये वियना कांग्रेस हुआ था. उसके बाद अभी व्हाट वाज वियना कांग्रेस? या very clearly it is given here in the next page, children. You can see 1815 में it had happened after the defeat of Napoleon in the Battle of Waterloo. The changes happened and आज जैसे हम जो कहते हैं making of nationalism in Europe, just see. There were nation states. जैसा आज in today's time we know about the nation states, the way it is existing today. ठीक है? What we know today, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये ना पहले एक नहीं थे. Germany was not in the form of Germany the way it is today. Got it? Same thing was there with Italy. Same thing was there with France. It started from France. तो that's why तो it was said ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मतलब मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया है, these were not the nation states. स्टेट्स का रूप मिला इसको आफ्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. गॉट इट? Then aristocracy, new middle class developed. And what was the concept of this new middle class? उनका तरीका था, वो किस तरह से रूल करते थे, what all changes they have made. The new middle class कौन थे? These were those people who got a little bit of education and tried to bring changes.
उसके बाद लिबरल नेशनलिज्म, आपको लिबरल का मतलब समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. प्लीज़ गो थ्रू इट प्रॉपरली. लिबरलिज्म, ये जो मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये मीनिंग आपको एज इट इज़ करना है. यू हैव टू डू दिस मीनिंग दैट इज गिवन हियर. लीबर ये आपके पास भी है. प्लीज गो टू द ई बुक्स. वी आर ऑल यूजिंग द ई बुक्स. मैं भी ई बुक यूज कर रही हूँ. सो यू कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूज दिस ई बुक्स. ओके. आफ्टर दैट चिल्ड्रन, आप ये पीछे आप देख रहे हो लिबरलिज्म में क्या क्या चेंजेस हुए. व्हाट वाज द पॉलिटिकल लिबरलिज्म, व्हाट वाज द इकोनॉमिक लिबरलिज्म. बहुत यहाँ पे जो मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, economic liberalism and what all changes had happened due to this economic liberalism, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा. because for the economic liberalism you have to understand one concept, and that is, I think you all know it very well. क्या था यहाँ पे दिया हुआ था? इले तो दिया ही हुआ है, बट अच्छा, इट इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन. ये रहा. क्योंकि आपको इकोनॉमिक लिबरलिज्म जब आप एक्सप्लेन करोगे तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ोल्वेरन. ओके चिल्ड्रन. इसके बाद वियना कांग्रेस, जस्ट नाउ दैट वी वर डिस्कसिंग. अभी फिर बच्चे सोच रहे होंगे वियना कांग्रेस तो मैम ने स्किप कर दिया, बताया नहीं. नो चिल्ड्रन, इट इज़ नथिंग लाइक दैट. एवरीथिंग इज देयर. जिस समय जो कॉन्सेप्ट आ रहा है मैं उसी समय उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो दिस वॉज द वियना कांग्रेस दैट वॉज होस्टेड by Austrian Chancellor. Please remember, ड्यूक मेटरनिक. ड्यूक मेटरनिक ने इसको होस्ट किया था, सारे लोगों को बुलाया, एंड ऑल दीज पीपल दे सैट टुगेदर एंड देयर वाज अ न्यू एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म. ये सारे कंजर्वेटिज्म को और नेपोलियन ने हटा दिया था. जस्ट रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. ही वॉज द पर्सन हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म. तो जब वो लिबरलिज्म की बात कर रहे थे तो कंजर्वेटिज्म को उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया था. गॉट इट चिल्ड्रन? दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. तो प्लीज रिमेंबर, कांग्रेस, वियना कांग्रेस के साथ ड्यूक मेटरनिक वाज देयर, विच ऑल पीपल हैव बीन, कौन कौन से रूलर्स आए थे, क्योंकि सारे रूलर्स और उनके सारा राजपाट को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया था. finished all their rules. So how did it happen and who all were the people who were there? आप बर्बन डायनेस्टी बताओगे. द फ्रेंच रूलर्स वेर देयर, नीदरलैंड्स वॉज देयर, ऑस्ट्रिया वॉज देयर, जर्मन 39 स्टेट्स वेर देयर. वहाँ पे तो ज़्यादा कुछ चेंजेस इन्होंने नहीं किए. जर्मनी में जो चेंजेस नेपोलियन ने किया था, दे कैरिड ऑन. क्या था कि नेपोलियन ने जितनी भी चीज़ें की, वॉट एवर चेंजेस नेपोलियन हैड डन, यूरोप को उससे नुकसान नहीं हुआ. यूरोप डिड नॉट फेस एनी लॉसेस बिकॉज ऑफ दैट. द कंजर्वेटिव्स ऑल्सो फेल्ट दैट समवेयर इट वॉज फॉर द गुड ऑफ द नेशन, एंड समथिंग गुड हैज़ हैपेंड. दैट्स वाई दे सेट कि भैया राजपाट तो वापस लाना है, अपना राज खत्म कर देंगे तो कैसे होगा. सो कंजर्वेटिव regime was set up in 1850 and it was autocratic. अपने आप सारा रूल करते थे. ऑटोक्रेटिक ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. ऑटो, अपना. the rule that is by themselves. They don't listen to anyone, they don't follow anybody. Got it? वो जो सही समझते हैं बस वही करते हैं. दैट इज ऑटोक्रेटिक रूल. गॉट इट चिल्ड्रन? इसके बाद नेक्स्ट पेज में वी हैव रेड अबाउट द revolutionaries. I am not explaining this children, you all know about the revolutionaries. इसमें आप मजीनी के बारे में बताओगे. हाँ, I know that. इसके बाद इन द थर्ड टॉपिक एज ऑफ रेवोल्यूशन में 1830 to 1848, इन दिस एज ऑफ रेवोल्यूशन लॉट ऑफ चेंजेस हैड हैपेंड. इसमें जो आपको मेजर पॉइंट है, एक तो आपको 1 मार्क के लिए जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है कि मेटरनिक ने कहा फ्रांस को ठंडी लगती है, फ्रांस को सर्दी होती है, तो एवरीवेयर इट कैचेस कोल्ड व्हेन फ्रांस इज नीजेस. फ्रांस ने अगर एक छींक मार दी, एवरीबडी कैचेस कोल्ड. गॉट इट? एंड
देन अनदर वन वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. प्लीज इसको अच्छे से अपने हाथ से अपने नोट बना लेना. प्लीज मेक इट ऑन योर ओन. Don't think that I will give you any notes. I don't believe in giving notes. I believe in explaining the things properly and then you write it in your own words. क्योंकि ultimately बेटा एग्जाम में you all have to write it in your own words. That is. In the romantic imagination, I think this is one of the very easy topics जिसमें you have to just remember the name of these people who are responsible for the romantic nationalism. इसमें you will be getting lot of names. The people who have inspired the European countries. खाली एक जगह की बात नहीं है. They we have got the people from Germany, German philosopher. Gottfried का नाम है यहाँ पे. Just check out, children. Gottfried is here. Then you have in the next page you have the name of Karpunsky, Karel Karpunsky. Then you have language, the role that language played. Language also played a very important role in developing nationalist sentiments. That also you can mention. That also you can definitely explain. Please do that. All these things were happening. Nationalism was coming up. Acha, sorry, I forgot. All these boxes that are given here, children, jitne bhi boxes diye hue hain, these boxes you all have to do. Don't miss these boxes. I have discussed it. I am not going to discuss it again. You have to do these boxes while going through the chapter. Hunger, hardship and revolt. A lot of revolts had happened. ये वाला जब मैंने वीडियो बनाया था, somewhere my camera did not work and my video stopped. पता भी नहीं चला मुझे. I couldn't understand. Later on when I was watching the video, I thought अरे ये तो कुछ दिख. So you add, as you had the book, my lecture was there, so you can the book. Got it? And please do that. And then this again for 3 marks, a very frequently asked question is the incident of Silesia. What had happened in Silesia? I think it is in the year also it is given 1845 में. What was the revolt in Silesia? Just see how these inhabitants revolted and what was its outcome. आप ये अच्छे से इसको बता सकते हो. It's a story type, ना. You don't need इसमें कोई, there is no rocket science कि I need to explain it. It's just story, just go through it. Then 1848 revolution, again one of the very important topics. Please prepare 5 points for this. Okay, revolution of the liberals. How they have their revolutions had happened. Just see it is mentioned here. Abdication of the monarch and women also participated, especially in Germany, large number of people. In Frankfurt, what had happened in the city of Frankfurt. Yeah, this incident is everything about the city of Frankfurt. Everybody moved towards the German parliament. Parliament के तरफ everybody was marching and they wanted कि proper changes should be there. Women have been participating in all these movements uh, very generously and very wholeheartedly. लेकिन जब when it was said that rights would be given, at that time women were not considered. Remember 9th क्लास की जो बुक में आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन, तो जहाँ मन होता था वहाँ पे विमेन को एक्टिव बना देते थे और जब मन होता था पैसिव सिटीजन बना देता थे. तो यहाँ पे द रिवोल्यूशन, आई मीन द opposition by the women started. Okay, Frankfurt Parliament का, if this picture is given, children, just go through this picture once. When it had happened, St. Paul Church जो था वहाँ पे ये parliament was hosted and what all decisions were taken in the parliament, आप इसको अच्छे से बता सकते हो. Then making of Germany, I am not discussing it. A very detailed video I have posted in your website, so please go through that video. Same thing with the Italian unification. With the German unification, you have to remember the name of Bismarck, and with the Italian unification, children, you have to remember the name of Cavour.
Chief Minister Kavar. Then I discussed in detail about the strange case of Britain, how Britain got unified, and you have to mention about the countries. You have to always remember the Act of Union of 1707. It is mentioned here. मैं इसको underline कर रही हूँ, so that when you talk about the strange case of Britain, you have to mention about this Act of Union of 1707, where Scotland, Ireland, and Britain were joined together. लेकिन Britishers always have the feeling of superiority. वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते हैं. They always consider themselves to be as the topmost people. तो people don't like it. कितनी बारी लोगों को ये पसंद नहीं आता है कि Scotland and Ireland especially had to face a lot of problems. यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया है, सारे लोग साथ में हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है दैट ओनली वन कंट्री विल शो इट्स पावर. सो ऑल्दो पीपल अपोज्ड इट, लेकिन देयर वाज नो सॉल्यूशंस एज सच. दैट्स व्हाई we cannot describe it like that. Okay. The बच्चों, children, what we have done is visualizing the nation, how we have visualized the nation. Some activities are there. मैंने अपने videos में भी एक I have discussed about these activities. आप इस activities को देख लेना. Sometimes what happens that the marks that are given to you on these activities, ये activities आपको करनी पड़ती है. You have to do these activities as it is. Got it? तो ये है. Then visualizing the nation, how nation was visualized, how respect was given to the nation, and allegorical figure was there. I mean, Germania was there and Mariana was there. We have taken example only of two countries, that is France and Germany. So Germania and Mariana, these two allegories were there, which were depicting the nation. देश के बारे में, मतलब कि दो देश ऐसे एज सच यू डोंट हैव एनी फिगर ऑफ कंट्री ना, बट आप अपना रेस्पेक्ट देने के लिए आप कंट्री को उसी तरह से इमेजिन करते हो. यू इमेजिन इट इन दैट वे. गॉट इट? सो प्लीज गो थ्रू इट. इसको आप देख लेना. आई टोल्ड यू टू गो थ्रू बॉक्स 3. इट इज इम्पॉर्टेंट. तो ये आपको करना है बॉक्स 3. प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द पिक्टोग्राफिकल क्वेश्चंस. Based questions would be coming. Just a minute, children. मैं थोड़ा सा ना पीछे पिक्चर छुप रही है, तो आई जस्ट वांट टू कैमरा को मैं छोटा करना. हाँ यस, पिक्चर मेरी छोटी हो जाएगी. या दिस इज बेटर. So you have seen Germania is here. Nationalism and imperialism, again मैंने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया है, yesterday the video that you have seen, it is very clearly talking about the nationalist tension in Europe. Europe में how tensions are in 1871, and Balkan region, what role it played in the nationalism and imperialism. आपको Balkan region के बारे में you have to explain about this Balkan region. Children, which were the countries in the Balkans, इसके बारे में आप बताओगे. Got it? And then First World War क्यों हुआ, why First World War had happened, you have to mention about it in detail. So yesterday when we completed the chapter, after that I said that we will be discussing about the question answers. Now children, I'll be posting it on the snap homework also. Please keep checking the snap homework. Children, 5 marks is allotted for the work that you will be doing. आपको जो काम दिया जा रहा है वो आप कर रहे हो. Some of the students have sent me the pictures, some of the students have sent me the photographs. I really appreciate that. I thank you for that. लेकिन बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं? What are the rest of the students doing? Please see and please check that you all complete your work on time and send me pictures on my email. बेटा इसमें WhatsApp पे don't send. Why I am not
taking it in WhatsApp because the phone पे already lot of documents are there. So I cannot collect more documents. If it is kept in the mail, it would be safe also. Whenever I'll be needing it, I'll just check the mail and I'll give you the marks, allot you marks accordingly. But very less of you are giving, sending the pictures. Got it? Now I'm discussing the question and answers. आप एक बार ये देख लो. Write a short note on Mazzini. आपको पता है. Cavour, Italian unification. Greek War of Independence. Just now I told you. ठीक है, ये जो नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म में आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मिलेगा. प्लीज. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हाउ इट हैड हैपेंड, विमेन का रोल इसमें क्या था, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर देयर, विमेन वेयर जस्ट मेड टू बी लाइक व्यूअर्स, ऊपर में उनको बिठा दिया गया था. आप ये पिक्चर भी देखोगे ना, इफ यू डिस्क्राइब द पिक्चर दैट इज गिवन देयर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेंशन दैट. एंड रोल ऑफ विमेन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल, सो विमेन का रोल वहाँ पे दिया हुआ है. What steps did the French revolutionaries take to create a sense of collective identity among the French people? Please mention about the connotation that was there. Madame बोलते थे. Then equality bread was there and so many things are there. वो French Revolution वाले में topic में you will be clearly getting the answer. Who were Mariani and Germania? Just now we have done. Allegory of the Nation में Germania and Mariana का दिया हुआ है. What was the importance of the way in which they were portrayed? They were the ones who had inspired the people of the nation. People have drawn a lot of inspiration from these allegorical and they help the people to further um, unifying the nation, bringing them together, a sense of belongingness towards the country that is there. Trace the process of German unification. Please children, I am not explaining it. अपने words में लिख लेना, लेकिन let me make one thing very clear. Please write all these answers in 5 points. हाँ, छोटे छोटे points कर लो ना, क्योंकि अगर 5 marks के लिए आता है, you can easily deal with these questions if it comes in 5 marks. 3 नंबर का आएगा तो 5 को तो 3 में कर ही सकते हो, लेकिन 3 को खींच के 5 में करने में you will be facing problem. So make it in 5 points. What changes did Napoleon introduce to make the administrative efficient in the territories ruled by him? अभी वो सारा आपको sovereign और वो जितना कुछ है वो सब, I'm sorry, you have to mention about all that. Please mention it. Got it? Then you have the detailed question, discuss questions. Explain what is meant by the 1848 revolution of the liberals. What were the political, social and economic ideas supported by the liberals? Liberals का कौन सा आइडिया जो है वो सपोर्ट करके एंड दे हैव कम अप विद द रेवोल्यूशन ऑफ 1848. 1848 रेवोल्यूशन का टॉपिक इज देयर. प्लीज फाइंड आउट 5 पॉइंट्स फ्रॉम देयर. Choose 3 examples to show the contribution of culture in the growth of nationalism in Europe. So, culture. पहला culture में you know the most important thing that is a part of the culture is language. Please mention about the language. After that, the Grimm brothers and the stories that were written, and then you have to mention about music. It was all example. Contribution of culture, music, dance, painting, language, all these are part of culture. Got it? You can mention that. Through a focus on any 2 countries, explain how nations developed over the 19th century. आप जर्मन इटली दे दो, आप ब्रिटेन दे दो. यू कैन मेंशन अबाउट ऑल द कंट्रीज, द एग्जाम्पल दैट आर मेंशन देयर. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. What was the history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe? Strange case of Britain. Ireland, Scotland, Act of Union, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है. Last, why did nationalist tension emerge in the Balkans? Last and most important thing. I'm ending the video now. Balkan region
and the areas related to that. How nationalism started there and which were the regions that were involved in the Balkans. अगर नहीं रटोगे तो बहुत पछताओगे, मेरे से बाद में पूछने मत आना. Don't come and ask me. So Balkan regions, you need to be very clear on that. Okay. So finally I have revised. Now I have decided whichever chapter I will be completing. At the end of the chapter, I will be coming and talking to you like this so that you understand that wherever doubts were there, you can easily clear your doubts there. I have tried it. Otherwise, we will be having online sessions. You can definitely me anytime you want and discuss any kind of problems with me. Thank you, children. God bless you.